परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 17। एकाग्रता को अपनाओ, एकांत प्रिय बनो। आज का टॉपिक है मैं पवित्रता का समर्थ सम्राट हूँ। 17 योग janvier, l'amour अभ्यास pour la है आत्मा solitude मन et वचन pratiquer la कर्म concentration. संबंध संपर्क में पवित्रता को संपूर्ण रूप से धारण करने वाली समर्थ Sujet pour सम्राट ce हूँ। soir, je अनुभव करे suis un बाबा से empereur de पवित्र pureté कीर्ति मुझ tout-puissant, आत्मा पर पड़ते ही et l'autorité toute-puissante de अपवित्रता la के pureté. अंश वंश समाप्त हो रहे हैं। मास्टर पवित्रता का सूर्यपन चारों तरफ Moi là, je पवित्रता के suis un empereur प्रभापन फैलाने की puissant qui सेवा करे। s'imprègne pleinement de la pureté dans ses दिनचर्या pensées, पवित्रता paroles, का actions, संस्कार relations, भविष्य contacts, संसार का फाउंडेशन expérience que les है। rayons purs de Baba se ताकि posent sur lui et पवित्रता mettent के fin द्वारा immédiatement à toute नष्ट हो trace de जाए। pureté. उसकी विधि क्या है? Pureté et faites le अनुभव service करे de propager partout बुद्धि les की rayons de la एकाग्रता pureté. से परखने की शक्ति आएगी। Question de इसके réflexion, लिए les प्रयत्न sanskars de pureté शुद्ध sont la संकल्प fondation के du monde आचरण से futur. करे। Comment? Quelle est la एकदम méthode pour rendre सर्वरस naturelle la व्यवहारिक dharana de la pureté? एक रस स्थिति Le चाहिए। signal avyakt, grâce अगर au pouvoir अनेक de la रसों में concentration, बुद्धि और vous स्थिति recevrez le सतत pouvoir de रहती है discernement. Pour cela, तो vous avez besoin d'un niveau पवित्रता की constant शक्ति et कम हो stable en जाती allant है au-delà des और न bouleversements des परखने के pensées कारण impures et माया अपना inutiles ग्राहक बना afin de लेती है। recevoir la douceur de यह l'unique. माया है यह भी Si votre पहचान intellect नहीं et votre सकती। niveau sont attirés par la यह saveur राग de है nombreux यह भी जान artifices, नहीं votre सकती। pouvoir de discernement अभी हम diminuera अपनी दीदी से et vous सुनेंगे। deviendrez un client de Maya. Vous ne serez pas en mesure de comprendre qu'il s'agit de Maya et vous ne pourrez plus distinguer le vrai du faux. Maintenant, écoutons Niditi sur le sujet. ओम शांति। बाबा, हम बच्चों से क्या चाहते हैं? सर्वशक्ति हम में हो, Qu'est-ce que Baba veut de nous, les enfants? Que nous ayons tous les pouvoirs, nous ayons toutes les relations. Il veut que nous devenions comme lui. Et donc même le respect du soi, Baba dit par rapport à cela que nous allons devenir des empereurs. Donc, ça veut dire en Indie, donc nous allons devenir des autorités toutes puissantes de la pureté. Qu'est-ce que cela signifie? Cela, Baba dit que la pureté, comme qu'il y a les rayons du soleil, de la même façon, les rayons de la pureté et les vibrations devraient se répandre dans toutes les directions. Parce que la raison de toute la peine est l'impureté. D'une façon ou d'une autre, la base des 5 vies, même si c'est franchement, ou que ce soit même une moindre forme d'avidité, ou lié à certains sanskars, donc tout cela peut créer des bouleversements et pour cela, dans l'étendue que je me vois en tant qu'autorité toute puissante, les différentes activités, les acquisitions temporaires ou les bonheurs que je peux prendre de cela à travers les sens. Par exemple, je peux avoir des attractions et cela peut devenir une habitude. Vous voyez, quand par exemple vous écoutez les nouvelles, si vous ne mettez pas une limite à cela, alors cela devient un sanskar. Et donc, ici, les yeux, l'écoute, l'intérêt, il y a aussi l'écoute par rapport à l'intérêt, ça peut créer une attraction pour certaines personnes. Et donc, cela peut être pas utile pour moi. Si c'est utile, s'il n'est pas utile, j'ai pas besoin d'écouter. Sinon, je vais continuer de garder tout cela à l'esprit. Si vous voyez quelque chose
Si vous dites quelque chose, si vous écoutez quelque chose, même à travers tous les sens, quel que soit ce que vous prenez à travers les sens, cela va ensuite attirer votre esprit. Donc la pureté complète, il devrait y avoir cette lumière de pureté complète. Et quand Baba dit, tout comme le soleil, vous brillez, et alors Baba dit, vous devenez l'autorité puissante. Et ce sont des aspects très subtils avec le pouvoir de la pureté que j'ai à l'intérieur de moi-même, sera aussi en accord avec la capacité que j'aurai, la capacité, les habiletés. Si vous savez que la pureté est la fondation de la vie brahmine, le savons, mais quand nous avons ce genre de devoir, cela demande beaucoup plus d'attention par rapport à cela. Et c'est l'attention qui est demandée pour ce mois de janvier. Il devrait aucune trace, que ce soit de conscience du corps ou d'avidité ou d'attachement. Même une trace de cela. Et quelle est la méthode que Baba donne pour cela? Soyez, qu'il y ait la conscience. Pendant tout le mois, nous allons étudier cela sur le sujet de la solitude et la concentration. Et donc, aujourd'hui, nous avons un but, la tâche yoga pour ce mois de janvier. C'est ce que nous devons faire, nettoyer, préparer, faire du karma yoga. Et à l'intérieur, il y a cette attention pendant 1 minute, 10 minutes ou 5 minutes, quel que soit ce que je fais. Et alors cette attention qui peut être là, avec cela, vous êtes capable d'accumuler. Ainsi, nous devenez, Baba dit, Baba demande bien sûr que nous ayons 8 heures, mais quel que soit le nombre d'heures, que nous soyons capables de réaliser cela. C'est intéressant, c'est important. Il peut y avoir encore des attractions et cela peut créer un manque de concentration et cela peut venir de choses subtiles. Et quand il y a une attraction, alors je ne suis pas capable de cette forme de solitude ou cette... Comment je suis capable de mettre cela? Baba dit, quand il y a la concentration de l'intellect, alors il y a l'augmentation du pouvoir de discernement. Pourquoi et comment? Parce que Baba dit, pour discerner, pour discerner, nous avons besoin d'un constant et stable, être capable d'aller au-delà, la fin de toutes les pensées perdues. Même avant d'aller dormir, Brahma Baba, écoutez pendant 5 minutes, parce que les pensées émergeaient. Écoutez, je crois que c'est une chanson ou dans Baba dit, si votre intellect et votre niveau sont attirés par le goût de quelque chose ou de nombreuses choses, alors le pouvoir de discernement diminue. Alors vous ne serez pas capable de discerner. Quand Baba dit, ne soyez pas des clients de Maya. Quand Baba dit, vous ne serez pas capable de discerner par rapport à ça. Et vous continuez de faire des choses incorrectes. Nous sommes tous en train de faire des efforts actuellement. Que le pourcentage de 70% ou de 80%. Donc, quel que soit le niveau de pureté que nous voulons atteindre, nous devons renoncer à la relation. Et nous avons cette pureté, mais Baba dit, même d'une façon subtile, connaissez, sachez, s'il y a le moindre goût, une moindre attraction par rapport à écouter quelque chose, manger quelque chose ou parler de quelque chose. Il y a différentes formes d'attraction. Baba dit,
ऐसे तो बहुत Là, अटेंशन ce sont des रहता है acquisitions temporaires. परंतु देखो माया भी Et donc, nous continuons de ऐसे garder समाजिक certaines रहते formes ज्ञान से होती d'attention. Et है cependant, Maya, हम्म, c'est और हम लोगों को तो विजयी essayer होकर d'avoir une रहना chance है d'une façon ou d'une हम autre. तो माया के Et donc, गुलाम nous बनना devons नहीं चाहते venir victorieux. तो जब भी Si nous नोट करती venons, हूँ nous तो voulons मुझे ये pas. बात बहुत खींचने लगी है Donc, अभी ये बात मुझे noter si बहुत ces choses आकर्षित कर m'attirent रही है beaucoup, si ces aspects m'attirent autant. तो थोड़ा अटेंशन दे के उसको बंद Alors, करना je चाहिए continue d'éclairer, तो बाबा je कहते porte हैं une ना जब अपनी attention, बुद्धि सिर्फ एक बाप के साथ हो et ensuite, je me permets d'arrêter. Donc, Baba तो dit, इंटैक्ट हो जाएगी ना अंत तक तो donc, बोलते हैं non, कि que Baba, l'intellect doit être लंबा connecté avec समय l'unique, जब वो स्थिति होगी mais Baba dit non, तो quand आप vous बहुत avez समय ce चौधारी niveau, करेंगे pendant une longue période de temps, alors vous serez capable भारतवर्ष में तो देखो राजाएं d'atteindre ce niveau de क्या conscience d'âme pendant une longue करते हैं période de temps. अभी नहीं है राजाएं Non, तो en Bharat, हम लोग तो कलयुग के il y a अंत les तक करते rois रहना चाहते हैं jusqu'à la हम fin, तो सत्युग के mais आदि में actuellement, ils ne जाना sont pas चाहते vraiment हैं là, mais nous तो allons devenir des बाबा rois. को ऐसे मालिक Mais il चाहिए existe अगर ces rois de बाबा l'âge de fer. नई Nous दुनिया voulons बनानी devenir des है rois de l'âge d'or. Baba veut de tels सम्राट enfants भी तो वैसे चाहिए et ce monde va être créé. प्रजा तो चाहिए ही पर Donc, सम्राट भी le चाहिए souverain, les empereurs sont nécessaires, sont aussi nécessaires. तो कहते हैं ना Bien sûr, les बाबा sujets sont is aussi the most nécessaires, mais les prosperous empereurs and sont powerful nécessaires. kings Et donc, Baba सब dit, राज दुलारे बेटे सब राज attends दुलारे et puis les empereurs ये puissants. बाबा का प्यार है बाबा की हम सब Tous sont les दुलारी enfants royaux, les enfants bien-aimés. जैसे C'est कोई l'amour de कहता है मेरे को Baba. राजाई की परवाह नहीं मैंने कहा राजाई की Donc, अभी chacun नहीं de है nous, अभी भी c'est नहीं है pour chacun de nous, लेकिन बाबा c'est ce que Baba veut. Personnes disent, हमारे nous में ne जो sommes pas à la recherche समाधि de formes d'adoration ou de forme de शांति royaume. प्योरिटी की Mais Baba nous dit que nous devons amener ये सब बाबा cette हमें लाना pureté, चाहते ce हैं pouvoir de la pureté. Baba veut तो बाबा जो चाहते हैं हमसे वो हम cette करेंगे dignité à l'intérieur de nous. और Quel que अभी soit ce que नहीं Baba ये veut, सारे कल्प की c'est ce que nous बातें हैं allons vouloir réaliser. Et si nous le faisons तो maintenant, मैं जो बोल रही हूँ वो अपने को भी सिखा रही हूँ c'est donc pour le kalpa entier, क्योंकि हम dans tout ce सभी que को je अपनी dis, en fait, बुद्धि की c'est pour एकाग्रता moi-même. परखने की शक्ति समर्थ सम्राट Et maintenir cette concentration de l'intellect, ऐसा सम्मान रखने की afin qu'il y ait le pouvoir de discernement, afin qu'il puisse ओम augmenter शांति et devenir des ओम empereurs शांति et atteindre ce niveau de respect du soi. Et donc, nous allons faire ce devoir à travers la journée entière de nous. मैं पवित्रता का समर्थ सम्राट हूँ। योगाभ्यास में आत्मा मन वचन कर्म संबंध संपर्क में पवित्रता को संपूर्ण रूप से धारण करने वाली समर्थ सम्राट हूँ। Voilà, je suis l'empereur, l'autorité मुझ आत्मा पर पड़ते de ही la pureté अपवित्रता dans les के relations et les अंश connexions. समाप्त हो रहे हैं। मास्टर Expérimenter cette पवित्रता forme de का pureté, सूर्यमंडल moi l'âme. चारों तरफ पवित्रता के प्रकंपन Je फैलाने renonce à की toute forme de सेवा trace करें। d'impureté. चिंतन Je चेकिंग deviens un maître पवित्रता का et, संस्कार भविष्य et संसार je अब réponds ces niveaux de भविष्य pureté में de कैसे। partout. पवित्रता Les के sanskars de वर्णन में pureté sont la शुक्राचार्य fondation विधि क्या है। pour le monde futur. अव्यक्तिशारे बुद्धि की एकाग्रता से परखने की C'est शक्ति d'un क्या âme de है। pureté naturelle इसके लिए व्यर्थ व अशुद्ध संकल्प et को recevoir त्यागने से alors परे le pouvoir de एक बड़े discernement. सर्वरस लेने वाली एक रस स्थिति Et चाहिए। pour cela, अगर vous avez अनेक रसों besoin में बुद्धि d'un और niveau स्थिति constant et रहमत stable होती है sur le तो fait बुद्धि d'aller की aussi शक्ति au-delà कम de हो tout ce जाती qui est है ruineux et de और न pensées परखने के कारण impures. माया अपना ग्राहक बना देती Si है। votre intellect et यह votre माया है niveau यह भी पहचान नहीं सकते। sont यह रंग है touchés, यह भी ou जान नहीं attirés par quoi सकते। que ce soit, votre ओम pouvoir de discernement va diminuer. Et parce que vous n'êtes pas capable de discerner, Maya fait de vous ses clients. Et alors, vous ne serez pas capable de reconnaître que c'est Maya. Vous ne serez pas capable de savoir que c'est faux. D'accord?